able to cut it. Not even going to be able to cut it for a top 10, and definitely not going to be able to cut it for a top 5. And I'm not even going to say top 1 because that's out of reach right now. Yeah. I think it's very similar to using players pretty early. We know trying to avoid it. When they take fights, they look pretty confident. But I feel like it's all they're just too passive or they're over aggressive. Right? If we find that middle spot where they take fights that make sense, that would be the ego I want to see. Talking about too aggressive, there was a situation yesterday that you were. वापस से rematch हो रहा है. They were somewhere near Volcano, and there was a team just above them that pushed out. Yeah, the second finish was near Yasnai on the field. Like, Jack did. And they took a fight versus Nova, and that was like a perfect fight that made sense. They were aggressive on the position. Just was exactly. They wanted the crowd went wild as you would expect. Fantastic. That's a fight that's strong. Then the team third parties their position, and the Blues is pushing that team out of their comfort zone for a fight that is going to come their way eventually. They're going to have to chase it down, and they push it one by one. That is when they're taking a fight that's over-aggressive and doesn't really make too much sense. So just put a little bit more thought behind those fights. And I think तो बहुत लेट हो गया पर किस वजह से लगा? पर पता है नियो PL में ना एक बारी going from last to first. Now we haven't really talked about that much, Seven, but give me your expectation for this day in general. किसकी वजह से लगा? सिद्धू मूसेवाला का गाना लगा, बस सिद्धू मूसेवाला का गाना लगा. Still remaining there. Neyoo gaya. I think Gaming, I'm honestly not sure. If it was Alpha 7, I would say, yeah, I can see Alpha 7 definitely being there at the top. Sad I feel like I'm just not convinced with the inconsistency that I saw out of Inco Gaming. I think Blank was able to point it out perfect for us. That it was, I mean, they had 2 great games at the start, and then in the middle, they kind of just disappear, and then at the end, they showed up again. उसका नहीं बजा सकते गाना. What the fuck? कौन बोला? That they want to have here if they want to be able to maintain that first place. कुछ भी. And going from Inco Gaming and other teams that I personally want to talk about is going to be Fireflux Esports. And क्या सिद्धू मूसेवाला का गाना नहीं बजा सकते अपन लाइव kind of wondering what are they going to be able to do here, right? With the announcement of PMGC 2023 Grand Finals going to be in Turkey. I want to see more out of these teams right now. I mean, they started off the day with what, a 15th place finish for S2G with only 1 ranking point. That's not gonna be able to cut it, and then you got Fireflux only being able to get 2 points. अरे copyright लग गया ना मेरे को. It's China Day today. सीधा copyright लगा. No, they. stream ही बंद हो गया मेरा सीधा. Time at a time, okay? Okay. I'm still scared of. Let me put that into context. अरे बच्ची पहली बार थोड़ी बजा रहा हूँ. 3 साल से बजा रहा हूँ. आज के सो गया. Stay right now, okay? It's gonna. अब कितने copyright लगने पे नहीं होता वो एक आध रहता है वीडियो जो बजा नहीं सकते. Big Boss की वजह से लगा. Fireflux, they get 1 big. सिद्धू मूसेवाला का तो मैं डेली बजा रहा हूँ. Then they kind of like. Big Boss का I guess मैंने official YouTube channel से बजाया ना. Or you get eliminations, or you get placement points. We need to find that middle ground. Those are the 2 things we need to see from these 2 teams, and as of right now, we haven't really seen. Something that I love to see, especially the ones that are currently, I'm gonna say, between 3rd and 5th, right? We saw Inco Gaming getting away yesterday with being तीन copyrights है. The teams that were actually trying to catch up to, they just weren't performing. मैं बोल रहा हूँ today, those teams that are actually trying to catch up to 2nd place and 1st place will be performing, especially with what we saw, the jump up that we saw out of 4 Angry Men. They need to find a consistency. They cannot have this. They cannot be having those pop-up performances like you're saying. IPL हो गया. Talking about S2G. वो एकदम ही exclusive है. उसको तुम कोई भी और channel पे नहीं. I have the impression every. तुम उसको router पे चलाओगे ना. There's one word that keeps coming router back. पे आ जाएगा fine. Yep. It's a वो name. ऐसा वैसा नहीं. It will always be. And even if you get those big pop-off games and then bad games, वो एकदम exclusive है. you get those pop-off games too. So there's no like secret sauce. Okay, you need to just get himself those big games or just consistency. मैं उसमें Big Boss ने भी अपना एकदम exclusive करके रखा. 100%. A team maybe that's still in the middle of the pack. IHC, we saw them last game. अब भोसड़ी वाला तुम मेरे को बोलते हो हुड का watch party करो मादर चोद. From T2K, but then they fell off again. What's your skip कर थोड़ा क्या skip करूँ? behind IHC and maybe their performance today? Do you think they're going to be coming back strong? I mean, hopefully. Once again, that fight with Zyon yesterday when he took that 1v1 was looking really good. They were looking confident with their approach. I think it was Wolves in that 6th match. नहीं भाई सांटा बनकर एक रश लीव कर दूँ. मैं इस सब गंदे बातें कर रहा हूँ. How valuable that position actually was. Yeah, I do. Last God क्यों नहीं live watch party कर रहा है? Router पे कर रहा है. They were just seemingly not prepared. हाँ? तू जिंदा है ना? हाँ? हो गया तेरा lightweight का? क्या हुआ? तेरा live जिंदा है ना? क्या बोल रहा है? तेरा live जिंदा है ना? हाँ मेरा ही है. तू बोला ना lightweight चले गई थी इसलिए पूछा. आ गई. भाई मेरा नेट यार जस्ट आया बोलो. इनका खुद क्या लड़ गया? अबे वो देखा क्या ऑर्डर का वो क्या था गेम क्रैश हुआ था. ऑर्डर का? बोले कोई स्टोरी डाला ना PUBG बीच पे? मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मेरे को वो दिखा. We will see about that one. Let's do a quick recap of what's कोई been happening. PUBG पीस ऐसा कुछ नाम है उसने डाला है. Or not. Maybe we're staying right here. With a recap. It's coming right now.
Ooh, oh, that is just a lovely graphic. और इधर एसयूजी का भी कुछ हुआ है भाई, रीमेक चल रहा है एसयूजी के लिए चैट पे। न्यो भैया जय श्री राम जय श्री राम। रिमैच हो गया, मेरे को नहीं लग रहा रिमैच होगा भाई। अभी पूरा गेम खत्म होने के बाद कभी रिमैच नहीं होता। वही वही कुछ पॉइंट्स वगैरह का हो जाएगा ऐसा थोड़ा बहुत, कि नहीं होगा? वो भी होगा। Side of the map, so they tend to be on these eastern circles to always go for the instant rotation northern side of the river, because you have like maybe 2-3 teams, so the chances of you clashing in another team at that stage is very slim. It's been working out good for them so far. यो सॉन्ग लगा डर गया क्या? रुको भाई, कान तो ठर गई। मतलब नेक्स्ट चैनल ही उड़ गया। 420 आया। This is horrible. North is going to be hell. By the way, look at the 2-2 splits there from Nova. Yes, they always do it. They do, and we saw that yesterday, especially in Miramar. अपने वाला 420 है क्या? मूव करो। रुक जा देख रहे for them for that circle. And right here, I mean, it ended up working out perfect for them. शायद एक बार मूव करो पूछना। And I feel like this is what हाँ वही है bread and butter is. Being able to वही है, ले ले। यासिन बच्चे हैं। end up doing, putting themselves in a great situation, and then at the right moment, actually getting together and putting themselves in an even better situation. Shout out दे दे भाई। Splits enables Nova to do it. Sam भाई shout out to you। Boom, the circle pops off, and they saw this like, okay, we're going to go group on the 2 players further south. Go for the wide rotation. He said, avoid all of the madness up north. That is what enabled them to make it so far in the game, until once again, Neyoo bit it. But it's still far enough, and a really strong game. See, and this is what I'm saying for Angry Man. It would have been a completely different story if that T2K player didn't show up. All right, yeah, they have to rotate, but I mean, if they would have been able to just kind of push back on Godlike Esports, which if they didn't have T2K player just laying down. भाई वैसा कर देंगे नोवा तो सीधा कमबैक हो जाएगा ब्रो। कैसा? लास्ट डे वाला। #2 #1 Until they start performing. Yeah, not too cool. But at the end of the day, GG split. नोवा है भाई वो। कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को लगता है भाई लोग ना बेंचो पहले दिन ना देखते पूरा लड़क चल क्या रहा है, दूसरे दिन ना पूरा स्टडी करके आते हैं। With that being said, you can hear the crowd getting hyped up because we are going into match number 2. John, Allen, and Black, take it away. अरे ये हर बार पहले ही हाको। That's right, we're ready for Miramar. So the मैच में क्या सीन हुआ? बताओ ना। नोवा अगली। The players have loaded into the lobby. Second है। And they're getting ready for the desert. Absolutely, I think the desert is a very scary place. Big map, Alpha 7 usually was quite good at this one, influenced Kemin. Kind of took up that mantle over in Americas though for quite some time. This is going to be a little bit more of a difficult match. I think that with some of these other teams starting to build up momentum now, build up some games, some good consistency, we might see a very different Miramar to start off our day. चप चप मत कर बहन के लौड़े। बोल ही नहीं रहा। हाँ ठीक है ना, नहीं कर रहा ना मार के लौड़े। क्या सीन भाई? स्टूडियो का क्या हुआ? तूने ले लिया फोन 420? मिल गया? हाँ? अबे बोल रही नया कौन सा लिया? 14 प्रो मैक्स खेलने के लिए और क्या करेंगे? अरे नसीब में 14 प्रो मैक्स ही था बच्ची, इसलिए तेरा फोन गायब हुआ। फोन ले ले। ठीक भाई, फोन गायब हुआ ठीक है, बट ये डेटा तो रहता ना बस। फोन से महंगा डेटा ना भाई इसमें। अब से वो कर लिया गया हमेशा iCloud हाँ में भाई, से। साथ में ना होते ही गूगल ड्राइव पे अपलोड मारूंगा। देखिए लाइफ लेसन। देखिए सिखाने के लिए भगवान ने तेरा फोन गायब किया। Everything happens for a reason. लाला का बैग वो इज्जत से नहीं रखने के लिए। ना भाई, इज्जत से नहीं रखता था ना, उसको हमेशा बोलने के बैग ना। भाई मैंने तो रखा ही नहीं भाई, तुम लोगों ने ही उठा के रखा था। तेरा बैग तो मैंने छोड़ो ना भाई, क्यों बात करना है उसके बारे में। 2x करो। अबे बहनचोद 2x करके गार्ड में घुस जाओ उन लोग के। अभी कितना 2x करूं? लाला को दर्द होता है वो सब। मैंने तो अपना जो भी कुछ घुमा था पैन कार्ड को छोड़ के अभी बाकी सब कुछ बनवा लिया, वापस से रीसेट हो गया मेरा। गाइस जरा मैं आया पावर लेके, मैं देखता रहूं। अबे तुम लोग ने मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड ही नहीं लेके आए भाई उधर से। नहीं लेके आया? हाँ तो भाई बोला भी अबे बोले तो थे। भी नया बनाना पड़ेगा।
तो लाला नहीं दिखे क्या? देख भगवान ने तेरे को ये भी बोला है। कहाँ से लूंगा भाई, मैं तो ऑलरेडी निकल गया था रिसोर्ट। भगवान ने तेरे को ये भी बोला किसी के भरोसे मत रहे, खुद का खुद कर। अभी तो वहीं पे तो था, क्या बोलते हैं अपना मैरियट में। हाँ तो उधर मेरे को मिले ही नहीं वो। ऐसा नहीं है तेरे को दे रहे? मैं तो रूम में ही था, रुका हुआ था, सो रहा था। अरे जगह बढ़िया थी पता है मैरियट वाली। हाँ मैरियट वाली जगह बढ़िया थी। लग रहा था आसपास कुछ है। On the Bahia de Mar split and blank. You think you know circles? Name 3. This one right here. अबे ये गाने क्यों बज रहे हैं पीछे पीछे? अबे ये लोग पता नहीं क्या है, गाने चालू कर बंद करो। Able to land the winning shots over to T2K legend. मर गया बेचारा, मरा या बचा। Necessarily meant for this type of range, and you hit a few shots. Legend currently बच गया। circle though, of course, that east. अरे माफ कर दिया। गया 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 गया। Gravitating towards the center of it as per usual. Quite good at this one. We have no भाई बेचारा, last game down towards शुरू होते ही खत्म हो गया भाई उसका गेम। 4 AM also. नहीं रेंडर के बाहर गया, रेंडर के बाहर गया। अरे मार दिया। मर गया। A little bit early. Look at that. Looking at that player from T2K. It gets done and dusted. The Wolves. चाइना वाले गिव अप नहीं करते, मारते ही रहते। ग्लाइड करने आया था वे वो गेम में। Late survival for the solo that इतनी गाली सुनी होगी ना। 400 men as well. Doing quite a lot. Getting a lot of eliminations in that previous game. We saw only Inco get ahead of the 3 Chinese teams. And they were the ones to take the chicken dinner home. So, strong performance really from these squads. 400 men looking to try and capitalise on that, to try and convert on that, gaining a little bit of momentum. Northern side, Alpha 7 will have to push in through GeekFam if they want to get central. Inco, typically, as they always are, already very close to that central area. Influence came in. Team that I mentioned were doing a lot of work here on Miramar during America's PMPLs. See what they have to offer here today. Obviously, down in 4th place now, 57 points. Very good capability though to jump up a little bit, maybe even take 2nd place this game if Alpha 7 aren't able to find their footing, because right now they are slipping just a little bit. Got the slippery soles on when they really should have. अबे ये 3 टीम है ये ब्राजील से। Equipped with crampons. Spikes dug into the side of these rocky hills. Unfortunately, on the north side at the moment, would like to move further down past here. तीनों top 4 में भाई, तीनों top 4 में। Only Federals in this location, providing scouting for position to get some loot. I can't love nobody back. You remind me of a moment. अबे इंडोनेशिया की सिर्फ एक ही टीम है ना? Early occurrences going on right now. It's interesting that DRS went all the way out to Puerto Paraíso. They lost Hugo. कौन सा player है इसमें? Shore split north and south on those islands. क्या पता? चिंगहाई। I guess they just picked up those vehicles once the circle had popped. They decided that they're going to be moving up past Impala, which is currently empty, for DRS's progression northwards, and they can swing in from the east Short side here, near buzz Mount cut, Samuel. bro, buzz cut. Look at this tournament as a whole so far. We've had some very interesting ups and downs. भाई वो भी लास्ट चल रही है बे Also, इंडोनेशिया की the टीम। leaderboards in general, 11th place IHC 49 points. You're looking all the way up towards 4 AM at 61. तो मेरा proper buzz नहीं है। अबे यही वाले आए कैसे बट? Which is really not a lot whatsoever. That's one. इंडोनेशिया में हो रहा है ना टूर्नामेंट? इसके लिए दे दिया क्या एक स्लॉट? हाँ। अबे इंडिया में कराओ बे। बट अपने को इंडिया में तो इंटरनेट इश्यू से पागल हो जाएंगे बे। नहीं नॉर्डविन कराएगी तो नहीं होगा, बट अगर इंडिया में होएगा और ऐसे एक को स्लॉट देना अबे तो इधर लौड़े इधर सीधा वो डालते रहेंगे वायर। अपने इंडिया में थोड़ी ना वायर वाला होता है। ये लोग का लाइन वायर होता है, ये लोग का लाइन वायर होता है, अपना वाईफाई होता है।
rivaling that point scoring of 78 after this game. भाई 4M मेरे को लग रहा है कमबैक कर सकती है अच्छा अगर कंसिस्टेंट खेल रही तो लैंड वायर फोन से होता है इनका कनेक्ट हाँ अभी इन लोग का तो वो रहता है ना खेलेंगे भी ना टीडीएम वीडियम एक कैमरा में देख एक ब्लैक वायर कनेक्टेड है हाँ देख रहा हूँ ये लोग मैच मेकिंग भी करेंगे ना तो ग्लोबल मैच मेकिंग भी होगा एक दूसरे में ही होगा तो ये लोग लाइन वायर पे कनेक्टेड है but it is still very, very tightly packed on pretty much the entirety of the tables, barring Vampire and Alter Ego. Thank you, Godless bro. चोर बढ़ गए हाँ भाई भाई फ्रोजन नया बंदा खेल रहा है कौन बिठाया किंगो भाई वो चोर दिख जाता है भाई चोरी करते अबे भाई दरी फोड़ता रे मैं तो उसको बस और जो हालत में था पूरा उस पे ही निकाल लेता भाई मैं तो खुन्नस माइंड पक कर दिया था भाई not ideal for them. Dampen the confidence just a little bit. Potentially. लाला ना तभी दूर खड़ा था ठीक है सबसे पहले ना मैंने आके देखा ठीक है कि लाला का बैग गायब है मैं वो कुछ तो बोला वो बंदे को जो खड़ा था उसने बोला कि वो बैग के अंदर है बोला बैग है किधर फिर तभी शैडो देखा मेरे को बोला बैग किधर है फिर उतने में कौन निक्सन देखा मैंने बोला लाला को बता लाला डांस निक्सन वॉशरूम गए हाँ लाला डांस कर रहा पर लाला को ना दूर से समझ गया अभी तक 4-5 लोग गलती करिए कुछ तो भी हुआ है लाला आते आते ना कुछ भी नहीं पूछा मेरा बैग किधर है मैं लग गया मेरे बोला आप भी मत बताओ लिख लेंगे तब बताना इसको फालतू का बीटी हो जाएगा अबे सबसे पता है सबसे भारी सीन पता है मैंने 420 को बताया ना तो 420 सबसे हाइपर हो गया मेरे को पता ही नहीं था 420 का फोन भी वो बैग में है मतलब 420 को क्या हो गया पूरा घूम रहा है नसीब तेरे को पता है क्या तेरे को पता है हर बार मैं ना अपना फोन इसके बैग में रखता है जब भी मैं जाता है ना कि मेरा जींस नीचे चला जाता है फोन पॉकेट में रखता हूँ तो मैंने रखा नहीं वो दिन मेरे को लगा मैंने चश्मा रख दिया मेरा उधर मैं चश्मा भी नहीं रखा कभी नहीं रखूंगा अगली बारी मैंने तो भी छोटा बैग लिया है then edge becomes a lot more valuable. You see the teams start to spread out a bit more. And तू किधर से लिया गोवा में था क्या हाँ किधर बैंगलोर से लिया तूने हाँ बैंगलोर में भी है क्या गुची और इसका लुई विटॉन का हाँ है ना सही है भाई इधर अपन ही भेड़ जो समुंदर के पास है बस चाहिए नहीं उसके अलावा समुंदर है बस वो भी गर्मी देता है ठंडी भी नहीं I was just keeping an eye on DRS and Buradam on the southeast coast. DRS fairly slow to rotate up from Delta Paraíso up to Impala, and it's allowed Buradam to actually catch up with them. अरे एक्शन भावा लग्न झाला की आता ब्रो होप मत रख रूल्स भाई इधर अरे मार अबे इतना क्यों डर के ओ डिलीट कर दिया बे इसको तो सर्वर से अबे टच हो जा भाई ये बच गया भाई जिसको मरना था वो जो बैकअप देने आ गया वो मर गया मैं तो बच गया हो जाए पर वो लोग अटैक कर देंगे तब तक तो अभी इसका क्या नाम है बे लेफ्ट वाले का आईएनएफ वाले का अरे इसको दुखी कर दिया वो नॉक हो गया गिर के नॉक हो गया बता बीच चला दिया भाई इसको किलर वाइटी को पागल बनाया देख रहे कितना पेशेंस है भाई में try and get Killer back to feet. Couple of frags going the way of DRS. Wolves have picked up. अबे ये तो बीच में फंसे हैं S2G. That'll be against Stalwart. Inco have lost a player as well. This is always the issue for A7. The influence come in take very similar rotational paths. एक मर गया क्या अपना? I think they do it a bit sooner, a bit more slick. हाँ. Now they have to figure out a different. किधर मरा बे? They could just go for action the blasting charge play. Try and set एक Godless अपना Godless नहीं है ना? Doors of influence come in. And just breach inwards. Not be a bad idea. Fortunately,
One of those fights that is not easy. Influence came in an A7. Both widely known बच गए वे लोग DRS वाले. Very strong fraggers on board. DRS ने तो पूरा नाला उनके लगा. बाहर रहना मैं फाइनल में बहसना बहुत दगदग होता है. Again, what I thought would be a big issue. और मेरे को जोन के बाहर अच्छा लगता है. जोन के अंदर दगदग होता है. कौन मारेगा मारे. Getting away with playing center far too often. So now everyone center early on. Keeps it chill. Keeps it easy. Nova's figured this out too. Oh, on that northern edge. नहीं होने वाला कमबैक एसटी का लग रहा है. कल भी इधर ही कहीं पास में जोन बना था भाई. आगे. Miramar never was their strongest map in the first place. Usually Erangel is where they shine. Most of their best rotations are there too. They can get those blast out performances on those maps. आगे फ्रोजन पे नोवा नसीब लेके आती है. टेंशन नसीब दे देती है. समझ नहीं आता भाई. दूसरे दिन बनते ही रहता है भाई. और मेरे को लग रहा है ये हाई किल गेम देगा उनको. फ्रोजन पे आके स्प्लिट मार देंगे ना. और मेरे को लग रहा है एक ना एक बंदा तो छत पे चढ़ेगा भाई. अबे क्या कर रहा है? अबे क्या हो गया? AFK हो गया. नेट दिया उसका. बेचारा. अरे शायद हो जाए भाई. चाइना के साथ ऐसा होएगा तो फिर होस्ट कौन करेगा टूर्नामेंट. नोवा टेंसेंट नाम में टेंसेंट है. डिवाइस का कुछ सीन हो रहा होगा. क्या मैच होता है? नहीं डिवाइस का ही हो रहा होगा. इंटरनेट तो ऐसा नहीं होगा. अबे नहीं मैं नियो की बात कर रहा हूं. अब एक चिकन मारा नोवा अगर 10 किल तो 25 पॉइंट 77 डायरेक्ट थर्ड आके बैठेगी. नोवा का कमबैक स्टोरी बनते है क्या बिहार वाली. माफियोसो. ये माफियोसो वही है ना. उसके साथ रहता है स्वागन. डांस करता रहता है. टॉप 1 2 3 वाले लोग अपना स्ट्रगल करते रहते हैं. नीचे से नोवा धीरे फंसता जाती है. वो तो लफड़ा. अरे भाई स्टोरी. ओके मैं तो गया. अरे अच्छी बन जाएगा अपना. कोई देख ही नहीं रहा. ये लोग दो ही है और सिर्फ डाल दिया. ले लो मेरा किल ले लो. मैं आई अंदर आई. कोने में हूँ मैं. इधर कोने में. गोली भी नहीं मारा भाई उसने उसको. मैं इधर कोने में हूँ. मेरा किल ले लो. अब इन लोगों का नाम मस्त है. मेमोरी रिमेम्बर मेमोरी ब्यूटीफुल. रिमेम्बर मेमोरी ब्यूटीफुल. 1v4 चल. अभी आ गया तो 1v4 मार दे. गोली में जलते हुए मरा ये. इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है यार. हाँ डॉबी तुम्हारा आवाज कितना टाइम बाद. कौन बोला था उसको? यार वैसा क्यों किया बे उसने. अरे वो प्लेस हो गया. अभी किधर डालो भाई. वो कहां डाले. गाड़ी बढ़ जाती है उसकी. पॉइंट टेबल चेंज हुआ है. फर्स्ट को 10 पॉइंट मिलता है. अच्छा ऐसा क्या. नहीं ये इवेंट के बाद से. क्या मतलब ये साल इवेंट ये साल वो इंप्लीमेंट हुआ. चिकन का फ्री एंड यू टेट. क्या हो गया भाई. अपना टॉप जी जेल में अभी. Some real cheeky stuff there coming through from Fireflux, trying to pick up those eliminations. PUBG P story Nova device problem. अच्छा. That amount of HP. Inco. अबे गीक पे ही कटेगा क्या बे. वेयरहाउस वाला. भाई वेयरहाउस वाला जोन है. ये वेयरहाउस वाला जोन 100%. ये जोन तो रट्टा भाई. अभी नोवा पे इतना पूछा ना वाला ना. अगर ये लोग रिपोज ही करना चाहिए. भाई नोवा है वो कर लेगी डिफेंड. भाई नोवा को तो बहुत दिया तो इसने खेलने तो. पैराबॉय को एक्चुअली ना वो नीचे वाला छोड़ देना चाहिए और ऊपर आ जाना चाहिए. बट छोड़ भाई. नोवा है वो. क्या ही तो भी प्लान रहेगा उन लोग का. याद है ना शेल्टर वाला. याद है ना शेल्टर वाला. गेम साउंड ज्यादा करोगे. जॉनथन का है. नियो भाई. जॉनथन अभी है दुबई में. आई गेस दुबई है वो. कल तक आएगा. दुबई एक्सप्लोर कर रहे हैं. अरे गीक वाला दे. अरे जा रहे आगे. एक स्मोक डाल और जा. खेल सकते हैं. अबे वो एक स्मोक डाल के जाके मार सकता है.
Really good spot for Noah in green group last day #2 #1 in 3 matches history repeat. Another sound came out. अरे भाई वो लोग कर लेंगे from the इनको आता है depths अच्छे of my से lungs, apparently. अबे अपनी एसटी का है ये भाई इनको तो बहुत क्या? खतरनाक जगह पे बैठी है पता नहीं South side. कैसे गोली वीपी का क्या सीन चल रहा है बे सेकंड लास्ट भाई Gains very low on HP. Vampire Esports move up. वीपी 4 players still remaining. No changes. वीपी भी कमबैक देगी Points. Still a big game with भाई कल आखिरी दिन है a अभी lot of बस the rest of the teams. This is a अभी से देना कल आखिरी दिन है हाँ तो at the moment. Noah chicken this match Zian story Zian ने क्या डाला Darius chilling on that eastern side. The east is what they own. हाँ Noah ने chicken मार दिया अरे भाई Towards that center side. तो पुराने फोन चोरी हो जाते हैं गिव अवे कर दो नहीं ब्रो Zian डायरेक्ट वेन्यू से लाया हुआ है The difficulty with this one though is it's very Noah का chicken है I guess when he gets to a point where this is फाइन ना कर दे बे उनको वही तो फाइन हो जाएगा बात तो you're going to see a lot of teams trying to occupy this space, and Nova will have to regroup, recoalesce into one spot, try and focus on one point of attention. Paraboy is just moving backwards and forwards now, trying to gather as much information as possible, prepared for any kind of push from the team. No one really going to be pushing them from that northern side, though. There's a little bit too much open ground for them to try and cover, unless Alter Ego just try a full send straight through the middle of the circle. Southwest, I think they should be most worried about, with the Wolves and Fireflux both taking occupation up there. The southeast side probably going to be able to hold itself out for one more circle, so until that gets pushed in, should be quite safe. IHC looking for them to do a little bit more, honestly. अबे कोरियन तो घूम होने वाले भाई नोवा ने चिकन मारा नोवा का कमबैक है मार दिया उन्होंने चिकन Silas wants to put another अरे one, पता चला another ऐसे ही cat नहीं amongst मारा the pigeons. Kelsey has वैसा बोल taken रहा है knock in the meantime, but they will be able to res this as Silas continues the bombardment. अरे भाई A re-knock. And 2 players now down. There's a Molotov to follow it up, but Silas is going to roll on forwards. There is a player. ये मैं हूँ अकेला घुसूंगा मर जाऊंगा Taking a lick of damage and a nade over the top of the rock is not going to find the damage, and Silas has the chance. मारा है रे Shut down, and Silas ruins the day. पम डे भाई ये पम डे Beautiful nade over the top there. The arc is strong. Aims it perfectly. S2G realised they had to push a hole through into this circle, and that was the excellent time to do it. Fantastic stuff there. S2G भाई भाई a good chance. Unfortunately, with Kelsey going down in the back, took them a little bit longer to respond, and they would have liked. Para boy every time she closed her eyes Paraboy on the northwest point of the Nova hold did manage to find a player from Inco, but Geekfam ये किधर सर्वाइव कर रहे हैं over towards Paraboy. That's going to force Jimmy to reposition to get that res, and Inco might not be able to capitalize. They probably think he's still going. नहीं भाई स्क्रीन दिखा दिया मेन वाला नोवा का चिकन अच्छा स्क्रीन दिखा दिया क्या उसने अच्छी फिर अपने को देखना है कि मैं नोवा चिकन कैसे मारेगी ऊपर आ गया बेजू ऐसे ही मार गई अबे INF पे Fortunately, that delay there has caused some issues. Wolves भाई पूरे और INF के बंदे यार Pick feet though, still looking over the top. Neyooo going backwards and forwards, doesn't do very much. Sorkai sends ones back of his own. ऋषि भाई तो equally as inefficient. Catch launching ordnance, providing cover. The Wolves will have to move parallel to them. IHC crashing into Geekfam. Alex down first. Snipes able to get the flush almost instantly, leaving the numbers at 2 on the inside. IHC with 3 pushing through the building now. Godless trying to hold on these corners. Seol onto the upstairs, and Geekfam don't want to take this disadvantage. They're going to regroup, reposition, and fight 4 versus 3. But Micah falls down to demo as he sneaks away back into the building. The high ground occupied as well, as Seol has a nade to cook. They are launching that all flanks around the side for Geekfam. Godless falls. And IHC are down to 2 active. Yuhai around the door frame, looks for more damage and he'll find it, but Demo's still active. And there is only 1 player now left standing, as IHC were able to deal with the backlines. In the meantime, there's a ruck up coming through as well from Godlike Stalwart. भाई टाइमिंग है बेस्टी का fuck And this could be a whole host of points if they can move in at the right time. Damn rude for Geekfam.
भाई 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 गीक उठा सकती थी फायदा बहुत लो Crazy moments here coming from IHC to hold this one off, but Geek fam able. अरे खुद ही खुद को अरे खुद को ही फोड़ दिया पैनिक है अबे यही वक्त है एसटी थोड़े भट्टी में खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है रीसेट हो गए बे अबे तो होंगे ही If they'd have known the true numbers of the fight, they might have actually just gone for that push, but it's so difficult to know which way it's going. Nobody quite knows, unfortunately. 5 blocks were down in the meantime. Geek Fam and Stalwart still standoff now as we hop on over to S2G. This is south side of the circle. अबे S2G के 8 किल कब हो गए? Out than S2G. T2K as well at their eastern side. S2G have that way up on the cliff face. See Razy looking to try and just launch on over those rocks. Scrambling up the scramble. Nuato silent kill. A lot of these teams it is. आ गए एक ही barrage में आ गए लोग. This is where things are going to start to get a little bit harder. Halfway point VP on को that साथ ही next match. नहीं ये तो नहीं चाहिए VP ने एक्स वाला रोटेशन डाला Move up. 43 players left, 13 teams still going. Vampire Esports might have just found themselves a position. This is what I was talking about earlier with Nova. Having to recoalesce, they take the strong buildings for themselves, hoping to hold out from there. This could be another big game for Nova going forward. Influence came in also. It's DRS taking it down for 7. Reduced to mortals. This time around. Mardi. Saludi मर गए. Geek Fam, who have been able to hold out against 2. Geek pumped है bro. अरे ये लोग ऊपर तो नहीं जा पाएंगे. Pick up a lot of points now, Blank, on that elimination count. 6 eliminations for Geek Fam. नोवा बस बैठी हुई है, वेट कर रही है बस. ये नोवा बोलता है ये जोन खत्म होने के बाद ही तो अभी तेरे को पता है एक जोन रहता है मतलब जिधर ना बहुत फुल राडे हो जाते हैं वो सरवाइव कर गया ना. अबे ये देख 4 बंदे एक अबे गीक वाला शायद बच जाएगा. Still taking shots towards एक बच गया. has to hit the deck, continue to move around. Don't even know where he's being shot from. Down Rude, last remaining member for the team. And it's Alter Ego, in fact, in a pretty decent position, all huddled up in the shack. Squash could be really brutal here, but Razy's around the side, and the wolves are the other side of this hydraulic press that is crushing S2G. अबे wolves तो दो टीम से फाइट लेंगे. दो नॉक दे दिया भाई. तो लौड़ा एक में थोड़ी मारा है. अबे जिमी कहाँ से नॉक दिया बे? वो देखना wolves का एक. That's all they've got to play with. Really smart play there from Squash as well, because he wants to absorb those points coming through from S2G. Unfortunately, it may have just given them time to get these players back on their feet. They will unfortunately lose Calci in the process. Silas, a really good game so far. Silas will use his last grenade to hopefully confirm its elimination over towards Memory. Doesn't do quite enough damage, but should be fairly shortly regardless. Inco, playing around this edge, just give them a massive amount of cover. I said earlier, it's probably one of the best places to crash onto this position. Unfortunately, still taking damage. I think that might be either from Damrude or Alter Ego. Hey, S2G वाले लोग तो अभी ये जोन बताएगा अगर ये जोन बताएगा. भाई थोड़ा सा आगे जाएंगे S2G वाले फ्री किल से भाई इनको. अबे तो इनको ही भर रहा है. अबे भर रहा है इनको तो सीधा. That is a lot of damage he can pour through those open doors. Unfortunately, he's a little bit broadside to Inco's position. एक smoke डाल के कर सकते हैं. Nova, if they move a little bit further in, not that they have to with the circle. अब एक को knock के लिए डाल दिया बे कितना बदकिस्मत हो बस. Move too far at all. छुप रहा था बेचारा, छुप भी नहीं पाया. अपने बंदे के पैर के पीछे छुप रहा था तो भी हेड पड़ गई. You wonder if this might be one of the last. Matt का याद आ गया. Matt तो गायब ही हो गया. Put up a big performance or even look for the grand final title. With Micah back on board. Matt की टीम वो है ना, क्या नाम था उसका? और वो किधर है? मार्टिन. वो उसमें नहीं है ये स्टोन के साथ. Right now they've got to take what they can get. स्टोन तो अच्छा मिथ वो तो हाँ. साला इनको भी जिंदा है ये देखना. क्या जोन मिला बे नोवा को इसलिए चिकन है.
हाई ग्राउंड है उनको पूरा। अबे मिथ में नहीं है वे, मार्टिन कहीं और है। मार्टिन था भाई एक टाइम को बेस्ट प्लेयर वर्ल्ड का। बीएल में है ना शायद से। अरे वाइप भी हो गया इनको। इनको तो चौक जगह 12 किल है S2G के भाई। 13 S2G तो बहुत किल लेगी भी होते हैं भाई। पम्ड है भाई ये साइलस, साइको हो गया साइलस। सबको पेलेगा। In the meantime, Influence Kemen going to take the mad dash across the road. Crate and up to the hillside. Vampire on the broad of it. भाई केविन भी बहुत कंसिस्टेंट है। केविन किधर है? It proves to be troublesome. S2G Silas currently looking like a trash केविन को कौन सा compactor at the टीम है? moment because he is अच्छा INF क्या? right now during this match. Hamzy G assisting with some great shots coming through for the mini. कौन चला रहा है वो S2G का? A great supportive kit for him. Get the current damage as well. Look at that, really nice. भाई नोवा तो पूरा बैठी है वैसे आराम से। जोन है ना वो, कोई मतलब नहीं है। ओपन खेलेंगे तो वो लोग तो मर ही जाएंगे। ओपन तो खेल भी नहीं सकते। जिगोड किधर है? होगा इधर उधर। Sucking down the oxygen. It's not going super well. There's nades from Lil Boy. Stoned has one of his own. Did manage to get the heal off, and the stims are going to start to tick up now. So the longer they're in this, the better chance they have. 15 eliminations now for S2. 15 मार दिए बे। एक नेट से क्या सीन? अरे भाई They've taken a knee and nades over. A brutal. अबे पैरावे को पड़ गए। पैरावे किल क्यों रहा था? Jumping into this as they tipple over the top. Picking up a couple of those points. One player remains, and it's Pondbit for Alter Ego into the vehicle. 2 points for them. Nova. S2G तो भाई रैम्पेज मोड ऑन है भाई S2G का। कल T2 के मारी थी 17 के लिए 16। हाँ लास्ट मैच में, हाँ लास्ट मैच में 16 मारी सो। The massive eyes are on over towards S2G with that 15 eliminations. Everyone's staring at that. भाई 4 मैन सिर्फ नोवा है, इजी है इनके लिए। Points at the start of this game with 15 on the top of it. You're looking at a big points total, 68. लोग छपरे पे ना? Not including हाँ छपरे पे। points rankings either. So this could be a really good game for अबे T2 के वाले देख कहाँ छुपे बैठे दो, एक पत्थर के पीछे दो। नॉक था ना अभी, एक से नॉक करा दिया। भाई सरवाइव तो लोग भी कर ले रहे भाई कैसे से। साउंड नहीं आ रहा है क्या? From the top of the roof. अब यहाँ से Order. So long here in this position, but they are now with their backs to the circle and will most likely have to move towards S2G. ये दो नोवा वापस से भारी सिंगर है क्या? एक बार सेकंड। T2K getting picked apart now as S2G. अबे किल ही चोरी हो रहे भाई इनके तो आधे। Started this game blank. 37 points behind the leader. 7 किल मार दिया भाई इसमें। Of Inco. अबे इसको मार सकते हैं लॉल्स भाई आप भी खेलो पीएमजी से, खेल वे लॉल्स। अबे T2 वाले बंदे को तो मार सकते हैं भाई, ये लोग देख ही नहीं रहे लोग। Hell of a game, but this is how you do it. S2G with this match have got the potential to take over the top of the table. Last zone now. भाई केविन वाला बंदा। Everyone's thinking about this one. Nova, second game in a row. They find नोवा चढ़ गए। in a fantastic position. अबे जेन को कोई मार नहीं रहा है। वो देखिए नहीं ना उसको, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उसको। गया So aggressive. Frozen just stands over the top. There goes T2K. Alter Ego ladder up to 4th place. And potential to go further. And S2G now start their assault over towards Nova. Down the hill. First nade goes through. आईने वाला ऊपर आकर मारता तो भाई अभी नोवा का गेम खराब हो जाता वे पूरा। मैं उसको अपना पोजीशन मार सकता है पता है, अभी मार नहीं रहा, पोजीशन निकाल रहा है। अपने वेस में होता ना कोई मार देता पता है उठ के। नहीं भाई अपने वाले तो एंड तक रुकते हैं, स्मोक कर। टूल वाला प्लेयर होना चाहिए जिसको किल की भूख हो। जो अपने आइजन को वाले मैच होता है। So cautious here, Blank. 5 eliminations on the game right now. मैं तो मेरा मारा। And S2G just suppressing that red line. Influence Kemen is still here and he still wants to play. Order falls first. Jimmy pushes up to the right. अरे भाई जी। भाई जिमी का 1v1 है यार भाई, स्ट्रांग है। इधर से ये लोग भी दे दिए देखना अभी। लेकिन पे वो है ना लोअर। Silas is the last to be put under pressure, put to the test. चल भेड़ चोर। क्या चिकन मारे वे लोग। Position they held
पारा भाई बोलते हैं बैकग्राउंड का नॉइज़ ही हटा दिया। मैं इनका जैकेट अच्छा है यार। इतना ज्यादा हल्ला हो रहा है भाई। ये देखो डॉबी को जैकेट की पड़ी है। अरे मस्त लग रहा है। I don't think that could have gone better for them. They picked a great position. थोड़ा पैरा भाई से अच्छा तो ऑर्डर दिखता है। मुझे लगता है अभी एक एल्डर फ्लेम निकालेगा डायरेक्ट। शूं शूं। Never idle throughout this entire. ये जिमी बड़ा है ना, मैं गेस 24 का है ना। For S2G, we have. अच्छा ये लोग इधर ही बैठे क्या सामने ही? Everything went topsy-turvy towards the end though. Shots coming from behind from Alter Ego. भाई स्टेज तो बना पागल हो गई है। भाई लड़कियां। Completely confused towards those last moments. Regardless, they had gone through the ringer to get to that point. Unfortunately, Nova was just a little bit too hard to tackle. Just that. किल छोरी मारे भरत धड़ाधड़। ऊपर चढ़ के तो दो मारे। Might have been able to do a little bit more. If Ponbit had gone down earlier. अबे वो S2G के बंदे ने 6 बंदे मार दिए थे ना? A little bit more effectively, but they played it with 3. बहुत मारा था भाई। So long. भाई। Absolutely, they did. भाई नोवा है। They have to completely congratulate your boy Silas. ऑर्डर हमेशा गुस्से में रहता है। नहीं बच्ची, ऑर्डर गुस्सा होता है तो मेरे को फोड़ देता है। देख लड़कियां पागल। This guy is the golden survivor of the team, and he's certainly got a lot done there for himself. Got very, very far into the game and lived that one out. It was not an easy ने एक नॉक दिया है और एक किल किया है। 9 किल चिकन मारा ना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ OnePlus। Where you get caught out almost 100% of the time. So the fact that he made it that far, fantastic stuff. I didn't quite catch actually. Really Nova is unbeatable. हाँ मतलब उनका stats ये तो सही unbeatable तो है। Is a really great. जो उनका पहला गेम सेकंड इसमें फर्स्ट अभी आएगा फर्स्ट। वापस एक और फर्स्ट अभी। बोलता है। तो हो गए ना ऊपर आ गए ना ये लोग कमबैक फिर फर्स्ट आएगा। Very refreshing to get an audience that is cheering practically everyone on. I mean, even when S2G is doing really well, making some big plays, there's real appreciation from the crowd for those big plays. It makes me happy, it gets me hyped and hoping that if you guys can hear it in the back, you're getting hype at home too. अबे इनको पता है वो पैसिव नहीं खेलती ना, STG को वाइप कर सकती थी। हाँ मेरे को बिग बॉस का लगा। दोनों तरह से वैसे ही सीन था। इनको पैसिव खेल रही थी और S2G भी। थोड़ी देर बाद S2G बोली आई तो मार दो। मेरे को गाइस ना बिग बॉस का लगा। मेरे को भी आया कि मैं वो अर्चना वर्सेस स्टैट्स का फाइनल। फोर्थ आ गई अरे भाई। गेम बाय कलर्स टीवी। फोर्थ पे आ गई। And it was against diminished forces from S2G, from everybody else that surrounded them. Nova were able to take care of business and handle it. मैं हमारा बाबा पर हमारा भाई शांतनु रोड क्रॉस करके क्यों नहीं आया जरा पूछ लेना कमेंट्स। अरे भारी नाम किया भाई और ये इस पे भी भारी नाम किया। इससे पहले मारना चाहिए था पता है आईने वाले बंदे ने, तो नोवा हो जाता। दे देता नॉक फिनिश हो Thank you so much, John, and back and welcome back to the desk. भाई तो भी S2G ज्यादा पॉइंट ली पता है 20 में। Back in the hands, S2G taking home a win in at least points-wise, a win in a incredibly convincing fashion. But in the end, it was actually Nova that got the chicken dinner. Tell me about it, Max. I think it's fair to say, Seven, this is the Nova we wanted to see. This is them. They're turning up the heat right now in this second day of play for the grand finals. And I don't think they're going to slow down. They're going to keep the heat going even higher and about to melt the entire arena. We've been teasing it. We were talking about it yesterday at the end of the day. We talked about it at the beginning of the day too. Nova on day 2 is an absolutely different animal. I mean, for them to be able to get 24 points. I mean, S2G, we got to give them some credit. We've been talking about how, yeah, they're able to get elimination. Sometimes they're able to get placement points. This was the perfect marriage for both of them. Silas, he is absolute clinic in this game. That Neyoo, he eliminated almost the entirety after that with his team of fools. If he cleared out Neyoo, they just cleared all of PEL pretty much. But today before he goes to sleep, he's definitely going to be looking at that 1v3 versus 4 angry men. He's going to be like, oh, a core memory has been created. Something incredibly interesting about that game was as well, Kelsey, your star player, kind of star player in that team, he got
taken out very early on, and they still managed to pull through almost the entirety of that game. Yeah, exactly. I mean, Silas just pretty much like clutched things out a lot of the it was a big portion of that game. It was a Silas show at the end of the day. But yeah, that's the cool thing, right? If you're still a team that, despite losing a player as valuable as Calcius, as I say, like I do really like Calcius, one of the top players in the European region. It goes to show how good all of the players currently are on that roster. Even when they're missing one great player, they can still perform and just pop the hell off. Currently with the most the most eliminations in a single match. That's what I was trying to say. Yes. Before we head into a small break, and afterwards, don't run anywhere. We will have time to discuss that match in detail. But before we go into the break, quick shout out to our sponsors, starting off with Sony and the Xperia 1 Mark IV, that way. And obviously the Xperia Stream that you can see right here, which were co-developed in collaboration with professional esports players. PUBG Mobile with a total cooling system and multiple ports for intense gaming and streaming. And also Prime Gaming. If you haven't checked out Prime Gaming yet, it is time to do so. You will get free games, not only games, but free in-game content also for PUBG Mobile. So make sure to sign up and check that one out. Also, we want to thank the PBESI, which is the local association in Indonesia in terms of esports, they're handling esports, and we want to thank them so much for their support. I can't love nobody back. You remind me of the day. It's every night you coming back. What am I supposed to do if I'm so in love with you? I cannot get over you. I cannot get over in the chat. If you haven't, make sure to do so. You can check out the बच्ची गाने लगा दे बे थोड़े either in the chat as I've said or on all the social media platforms. So make sure to क्या बेचारा बोलते बोलते बहुत बोला रे उसने हाँ बहुत बोला वही देख रहा था There's something about you so addictive, had me needing more. Yeah, I just wanna hold you, baby, you the one I want. I know I'm said this all before, but I'll say it again. You the only one I want, and girl, I can't pretend. I remember cloudy days we cuddled in my bed. The thought of losing you just makes no sense inside my head. You the reason I believe that love is real. Ain't nobody make me feel the way you make me feel. Darling, tell me, is it real? Or was I lying to myself just to make it feel so real? Ain't nobody gonna love you like I love you. Ain't nobody gonna want you like I want you. Ain't nobody gonna trust you like I trust. Ain't nobody gonna, ain't nobody gonna, ain't nobody gonna love you like I love you. Ain't nobody gonna trust you like I trust you. Ain't nobody gonna want you like I want you. Ain't nobody gonna want. I can't love nobody anymore. You the only one that I ever want. I compare her to you. She has never won. Now I wanna just be all alone. Nobody love me like you. I can't love nobody back. You remind me of the moon, cause every night you're coming back. What am I supposed to do if I'm so in love with you? I cannot get over you. I cannot get over you. Since you left me, every night I go stare at the moon, wishing it was you and I, that's something we would do. Every Sunday morning I go watch the flowers bloom. I do things we used to do, hoping I'll run into you. What's a lie and what's the truth? I cannot get over you. Doesn't रोक मेरे लिए रिंग करो, प्लीज मेरे लिए मत रो, मेरे लगाम दर्द दो,
रुक तेरे लिए रहेगा जो प्यार मेरे लिए रहेगा तेरे तेरे मन को यार मेरे मन को टाइम पे लेकिन अब मेरे पैसे की बारिश फ्री में ये रैप कर दे कैसे लेके मालिश ट्रैवल की इज्जत नहीं इंडिया में क्या बना था इज्जत में आर्टिस्ट की रात दिन काकी ने पकड़ा था बोलने के आर्टिस्ट वाइसल भोपड़ा जोगा रहे ले वापस फ्लैश करा रहे तो तेरा वर्ली का ऑफिस शायना सुन के बोला कैन यू प्लीज स्टॉप घर का हाल कर मिलो छोड़ दे पानी में मछली को हम से हंसते थे असली को आज के फुल काट में बोल लड़के लो कभी नहीं रुकेगा अपने को करने वाला मेरे सपने को रे भी संगर था मैं बस्ती को तेरे पास पैसे ने कचरी को रुक तेरे लिए रहेगा जो लोग मेरे लिए रहेगा रो प्लीज मेरे लिए मत रो मेरे लखान भर दो रुक तेरे लिए रहेगा जो प्यार मेरे लिए रहेगा अब मेरे तेरे मन को शांत रहो मेरे पंख को बोल कर हुआ ना सो you acting like a UN bro hit from vaccine I post my IG blow हर जगह दिखे मैं गलो दुश्मन दुश्मन को सारे तेरे बन को क्या बोलता आकाश bro जान मेरे 10 लाख लो that's my bro शॉट बजा 10 स्मैश को वांदे को रास्ता दो तू मेरे सबसे निकलो इसलिए मैं देने का रो जाने का बीच में गो जा रहा मैं where is my glow रुक तेरे लिए रहेगा जो लोग मेरे लिए रहेगा रो प्लीज मेरे लिए मत रो मेरे खिलाफ गान भर दो रुक तेरे लिए रहेगा जो प्यार मेरे लिए रहेगा हो साफ करा तेरे मन को शांत रहो मेरे पंख को चाटा नहीं किसकी वरना मैं गुस्से जिंदगी जाएंगे तेरी पूरी डूब पे ऑब्स करे गेम किधर तो छुप के एक टाइम पे करी तब बजने से छूट कभी नहीं समझेंगे फैशन है लुक के थोड़े दिन रुक मेरा शूटर आ रहा छूट के रुकता मैं कभी नहीं रुकाते नुकते कपड़े नहीं खरीदता बनाता कोटे में बेचने का डो किस पे नहीं रखने का हो शान मला एक जासूसो ये लड़के लोग बोलते रे ब्रो 10 लाख को करता मैं शो 10 बातें करता ये ब्रो बस दोनों लेकिन वो हो क्या गरीजा बड़ा था जो रुक तेरे लिए रहेगा जो लोग मेरे लिए रहेगा रो प्लीज मेरे लिए रुक तेरे लिए रहेगा जो लोग मेरे लिए रहेगा रो प्लीज मेरे लिए मत रो मेरे खिलाफ गान भर दो रुक तेरे लिए रहेगा जो प्यार मेरे लिए रहेगा हो साफ करा तेरे मन को शांत रहो मेरे पंख को अर्पण अब नहीं हो सकता अर्पण अब नहीं हो सकता मैं तेरे आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया मैं तेरे 119 मिलियन कभी देख सकता नहीं सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा मैं तुझको दे दूंगा मेरे जान तूने मुझको पागल है किया मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा तू मान मेरी मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे मैं रहना 24 घंटे मैं आंखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे हाय तेरे जो भी गम थे मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं ऐसी रब से मैं मांगू दुआ
तेरे दिल से ना कभी कहूँगा सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर तू मान मेरी जान नान चाकू बोलते हैं यार बच्ची तो देंगे ना तुमको सीधे मौत खोके मुखोटे मुखोले मुचोदी पे कोडे फिर गोटे पे गोडे हैं दबा के जोटे पे जोटे हैं लौंडे रे मस्ती में फूक जय वीरू जोड़े जो लिखे वो शोले लगा देते लोड़े जो ज्यादा मुखोले या चाटे नहीं तोले बस तोले हैं तोले तोले कर ले अग्नि महसूस तो आ मेरे पास आगे राजा इन सांसों के जुए का पासा है बेगम तू मेरी मैं हूँ तेरा पाशा वो रखे अशे से महफूज तो करियो ना कोई हरकत लौंडे आ जाते हैं मरकर कतल है सर पे सड़सड़ लाला का जी